another new day and a new vlog upon my channel Rajesh by Choice. तो आप लोग ने देखा मेरा गार्डन का हालत. तो after the summers arrived, my garden literally became like a mini forest. और मैं अभी शो कर रही हूँ. It's just 9 AM in the morning and I just got up from sleep. और मुझे सौरभ ने बताया कि गार्डनर्स आ गए हैं to clean up my garden. So I'm going to quickly take some photos that how my garden was before the cleanup, and then I will show you how my garden became after the cleanup. So stay tuned, guys. Bye. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है 1 PM और जो ट्यून मेकर्स आई मीन द गार्डनर्स जो आए थे दे केम नियरली एट 8:30 AM और अभी आई विल शो यू द गार्डन. ओके, स्टे ट्यून्ड. So this is the back side of my garden. Winters में तो यहाँ plants के leaves गिर जाते हैं, but during the summers the plants grow, they become greener. तो green वैसे अच्छा तो लग रहा था, but काफ़ी ज़्यादा honey bees, flies ये अंदर घर के अंदर आ रहा था. And also कि जो plants है वो काफ़ी बड़े हो गए. तो I really wanted to trim it off. I wanted to grow some different plants also. तो इसीलिए कुछ प्लांट्स जो मतलब मुझे लगा कि शायद नहीं रहने से बेटर होगा, मैं उनको हटा रही हूँ. एंड आई एम इन अ लाइक यू नो आई एम सुपर एक्साइटेड टू प्लांट सम ब्यूटिफुल कलरफुल रोजेस. फर्स्ट तब से लेकर अब तक माई स्मॉल मिनी गार्डन टर्न्ड आउट टू बी अ मिनी जंगल. सो इसीलिए अभी हम लोग सो गाइस यू सी हाउ ब्लू द स्काई इज. एंड मैं पहले बार अपने बैल्कनी से खड़े रह के ब्लॉगिंग कर रही हूँ. एंड गाइस आई होप यू लाइक माई गार्डनिंग ब्लॉग. गार्डनिंग मैं तो नहीं कर रही हूँ, ऑफकोर्स आई हैव टू द गार्डनर. तो इस घर का जो गार्डनर पहले भी हुआ करता था, पहले ओनर का जो गार्डनर था वही गार्डन कंपनी से हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है. एंड जस्ट फॉर द क्लीनिंग आप लोग ने मेरा गार्डन ऑलमोस्ट देखा ही है. आई हैव 2 parts ऑफ गार्डन, वन इज इन फ्रंट, वन इज इन द बैक. द बैक गार्डन डजंट हैव मच प्लांट्स, इट जस्ट हैव द बॉर्डर विथ ग्रीन प्लांट्स. और यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं. और ये पूरा गार्डनिंग करने के लिए, ये पूरा कटिंग करने के लिए एंड रोज़ बेड्स लगाने वाले काफ़ी सारे चीज़ें, वो सब करने के लिए दे आर गोइंग टू टेक 1038 euros. क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ टैक्सेस इन्वॉल्व इन इट. देर इज़ ऑल्सो मनी इन्वॉल्व फॉर थ्रोइंग द ग्रीन फील्ड. तो ये जो ग्रीन वेस्ट है, ये सब जो ग्रीन वेस्ट है ये सब फेंकना भी पड़ता है. एंड दिस इज़ जस्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ इट, काफ़ी सारे निकलने वाले हैं. सो ये सब मिलाकर रोज़ बेड्स लगाने वाले, कुछ पेरिनियल फ्लावर प्लांट्स लगाने वाले. पेरिनियल प्लांट्स आर द वन दैट ओनली स्टेज फॉर अ पेरिनियल टाइम ऑफ just stays for perennial time, that is only for a year. Or yeah guys, so I'm super excited and I hope you guys are also liking this vlog. So stay tuned with me till then. Bye. My garden अभी बेसिकली ग्रास क्लीनिंग चल रहा है, तो आई विल नॉट ओपन द डोर बिकॉज वो जो डर्ट है वो अंदर आ जाएगा. So yeah guys, now the garden cleaning is going on and I'm going to show you what all I have decided to do to the. तो this is the balcony view of my garden. तो आप लोग देख सक रहे हो कितनी तरीके से जंगल हो गया था. That side, this side, दोनों साइड. Working from home. Then it will be visible as a task.
Strawberry on my lips and your fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take my day off too. Ooh, feeling so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. The right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. I feel so on point. Forget who we are. Let's dance until dawn. Music on repeat. You can beat this feeling. So this is the backyard of my garden. तो इसमें this is the all green plant और ये जो है that is artificial greenery और So in love with the summer days. अभी काफ़ी सारे ग्रीन वेस्ट निकल गए, अभी मशीन्स चल रहे हैं तो शायद मेरा आवाज़ उतना क्लियरली ना आए. सो यहाँ भी मैं कुछ फ्लावर बेड लगाने का सोच रही हूँ एंड ऑल्सो इन दीज पॉट्स. दिस वन इज़ माई फेवरेट. सो या दैट इज़ माई बैल्कनी जहाँ से मैं शूट कर रही थी. So सब कुछ अच्छे से ट्रिम हो गया है. I've decided to keep this plant. It is a fruit plant and I've decided to keep this European jasmine. इसके अलावा I think सब पेड़ कट जाएंगे. So this is how my final garden looks. They have trimmed all the plants that was up. I have kept this plant. It's a fruit plant. If you guys know what it is, do let me know. I don't know. There were a lot of bushes out here. They did really grow very big. And I've cleaned out the entire space. I'm planning to do something different with this place maybe by next summer. And they have trimmed all the plants, have taken out all the weeds. They have also trimmed the garden and they have also put some perennial flowers on one of the tubs. I really like it. थोड़ा बहुत साफ मुझे और सौरभ को भी करना पड़ेगा. And here I have put some rose beds, so of various colors. This is white, pink, dark pink. This is also pink, but it is a different species of rose. That's what the gardener said. And my garden looks so neat, so clean. I really love it. And now I'll take you to the back side of my garden. And this also is clean and neat now. They have trimmed everything. I can also peekaboo my neighbor's house there. And this is artificial grass, so this never grows, of course. And this is all clean. And okay, fine.
That's me. So yeah, my garden has become super clean, super maintained, super trimmed. I've also planted some rose bushes, so I'm just hoping ki it gets proper sunshine, proper rain. I also water it regularly and it grows, तो और ज़्यादा colorful लगेगा. And yeah, this is the garden. So now I'm going to do a little bit of cleaning of the garden, maybe today or tomorrow over the weekends. Just clean a little more and make it really good. You have to keep cleaning the garden almost every week. Otherwise, कुछ ना कुछ गंदगी होते रहता है. So this is the final outcome of my garden. In this area मैंने coriander लगाया, पुदीना लगाया. एंड दिस इज़ समथिंग जो मैंने अभी एक दुकान से, नेम है एक्शन, वहाँ से मैं लेकर आई हूँ. आई हैव ऑल्सो पुट इट हियर जस्ट टू एड मोर कलर्स एंड आई हैव ऑल्सो पुट वन हियर. सौरभ ने पानी वगैरह दे दिया है एंड वी ऑल्सो क्लीन द रिमेनिंग एरिया. वी ऑल्सो बॉट अ पाइप, ये हम लोग के पास नहीं था. So now as our garden is ready, we also got a pipe from the same shop, Action, जहाँ से हम लोग ने ये लिया. वहाँ काफ़ी cheap stuffs मिलते हैं and it's really good and durability is also nice. So yeah guys, this is the final look of the garden and I hope you guys liked it. Roses haven't grown yet. I'm waiting for it to grow. So guys, do let me know how do you like my garden tour. Till then, bye.